Hello, guys. Yeah, Tharva, sorry for the interruption. There is a lot of issue from YouTube. It's not from our side. Everything is running there, but there is an issue in live streaming. Hi, Karthya. Hi, Keshvi Jagtap. Sorry for interruption, guys. काफी दिक्कतें आ रही है यूट्यूब की तरफ से. So it's not related to the our side. Okay. Yeah. Good evening. Yeah. So वी आर लाइव अगेन. ओके, एंड हम चाहते हैं कि आपका लेक्चर अच्छे से हो, आपकी चीजें अच्छे से हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई वी आर हियर. सो गाइस, डोंट वरी, we'll do it again and we'll start it again once all the student join here. Okay, so guys, yeah, Vinay, good evening. Yeah, sweetie, good evening. या ओके, डोंट वरी सर, आएंगे. सर्टिफिकेट मिलेगा. यस, यस बी क्रिएशन, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा आफ्टर वन टेस्ट. यू गाइज विल गेट द सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट के लिए हम लिंक शेयर करेंगे. जो आपकी क्विज है, वो क्विज देने के बाद आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेंगे यहाँ पे. वंस द स्टूडेंट विल ज्वाइन, हम लोग स्टार्ट करेंगे. किसी को कोई क्वेश्चंस है करियर रिलेटेड या रिलेटेड टू फ्यूचर एनीथिंग, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. डालिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो. या अनिशा, डोंट वरी. ओके, yes, SB, we have a SB creation, we have WhatsApp group as well. Pankaj, please share the WhatsApp link in chat box. Guys, you will get the WhatsApp link over there. Mohit Gupta, we are starting the session. There is a lot of issue due to some issues. Okay, and now we are sorting that. Yeah, Ayushman is asking after BCA क्या करना चाहिए. Okay, Ayushman, my suggestion is to you that after BCA you should start the corporate job. Okay, आपने आपकी corporate life start करनी चाहिए. Do some good courses. Okay, improve your skill like programming skills. कोई भी section में आप जा सकते हो, like full stack development में, front end में, back end में. Then there is option related to business analyst, data science. And the session, today's session जो हमारा है वो SQL पे is on structural query language. If you know the Excel and SQL, then you will also get the job. Okay, Ayushman. Atharva is asking, sir, please tell about the cyber security. Yeah, you are from Maharashtra, Atharva. I am from Maharashtra as well. Okay. Yeah, we will keep one session on the cyber security in upcoming days. So you will get the idea about that. Yes, okay. Then anyone question? Yeah, from Andaman, we have a student. Sir, data analysis demand. Yeah, so it is saying there is lot of demand in the data analytics. First, you should know related to the data analytics. You should know the techniques. You should know the tools like the SQL, advanced Excel, then Python, Tableau, Power BI. ये आपको सब learn करना है, sweetie. Yes. Then Devidas is asking, sir, BCA क्या करना चाहिए. Just I had given the question after BCA क्या करना चाहिए. BCS के बाद भी आप आपकी corporate life start कर सकते हो. You can be a programmer, you can be a developer, you can be a tester. There is lot of opportunity in cyber, DevOps, cloud engineering, and we have also there. Rishikesh is asking, after BTech, where do we start to the work? Okay, you can start anywhere. Right now, the TCS hiring. Okay, someone asking, I am first year student. Where do I start? From what? Ansh, you can start with the basic programming. Okay, the mother of each programming is a C language. Okay, start with the C, C++, then Java. Okay, HTML, CSS. If you're interested in AI, ML, then start with Python as well. Okay, sir, I am third year. Vinay is asking that he's from third year, student and computer science. I don't have a project in my resume. Can you give something? Yeah, Vinay. Vinay, we are launching our new series.
where you will get the project IT idea, okay, and how to execute that project. So you will get that series as well. वैसे ही ठीक है सर 1 CR कैसे कमाए ओके गुड क्वेश्चन अच्छी बात है ठीक है व्हाट द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर सेक्टर नेक्स्ट 3 to 4 year महेंद्र गुड क्वेश्चन द फ्यूचर इज ऑल अबाउट द एआई टुडेज न्यूज ओके किसी ने आज की न्यूज पढ़ी होगी तो देयर इज अ 2.2 lakh job losses will be a lose in the banking sector because of AI ML okay 2.2 लाख जॉब्स नहीं रहेगी बैंकिंग सेक्टर में इनकी जगह पे एआई एमएल थ्रो चीजें होगी सो ऑब्वियसली देयर इज अ क्रिएशन ऑफ जॉब इन अदर फील्ड एंड देयर इज अ losing of job in another field so it's always balanced so you should learn the new technique like AI ML okay all that uh, what is the future score of data science? Gunit, good questions, Gunit. The future of data is bright. Okay, everything is on data. Okay, YouTube is run on data. Everything is your Flipkart, Amazon, everyone. So obviously there is a lot of scope for the data science. Data is right now the land. ओके प्रीवियसली जिस तरीके से राजे महाराजे के पास जितनी लैंड होती है उतने अमीर होते थे उतना उनका बड़ा साम्राज्य होता था तो अभी उसी तरीके से जिनके पास ज्यादा डाटा है ओके वही आप पे राज करेंगे लाइक द एग्जांपल फेसबुक इंस्टाग्राम ओके एवरीथिंग यू नो दैट ओके सो गाइस दीज आर द बेसिक थिंग्स टेक्निकल इंटरव्यूज के बारे में किसी ने क्वेश्चंस किया है guys we keep one session as well please start the session don't worry we are going to start the sessions within a 5 minute now the session will be a live sir will be a live there okay thank you guys for being the patience and we'll share the link as well in your chat box yeah I am handovering the session to this sir okay then आप यहां से चीजें कर सकते हो ठीक है यस Yeah. Hello. Yeah, welcome back. स्टार्ट से करो So hello, welcome back. Sorry for the issue here. Okay, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था. Okay. So here हमने स्टार्ट किया था बेसिकली जो है लाइक ये समझने के लिए कि डेटा क्या है. ओके तो अभी तक बात कर रहे थे कि डेटा 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 हर कोई डेटा के बारे में बात कर रहा है और डेटा इज बिकम सो पावरफुल. और अगर आपको याद है कि 7-8 years बैक जो है मुकेश अंबानी ने बोला कि डेटा इज द नेक्स्ट ऑयल. ओके यानी कि ऑयल अभी नहीं है डेटा इज द नेक्स्ट ऑयल. और हम देख रहे हैं उसी तरह जो है हर चीज हम इंटरनेट जब यूज करते हैं लाइक यू नो लॉट ऑफ डेटा वी आर लिटरली प्लेइंग विद डेटा प्लीज वी आर स्टोरिंग स्ट्रक्चरिंग and people are literally playing with the data. So what this data is all about? So समझ लीजिए आप हमारे रियल टाइम में हम हमारी लाइफ में जो है किसी कॉलेज चले गए या फिर किसी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें या फिर किसी बैंक चले गए अकाउंट ओपन करने के लिए या फिर मैं घर से मैं कर रहा हूँ तो हमेशा जब मैं कोई साइन अप करता हूँ तो मुझे जो है कुछ डेटा फिलअप करना है जैसे मेरा फर्स्ट नेम हो गया मिडिल नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. उस तरह आप अकेले ही नहीं आप जैसे लाखों करोड़ों लोग जो हैं दे आर फिलिंग इन समथिंग प्लेस. ओके सो हियर somewhere this data is to be stored because tomorrow you know like when you're checking यार मेरा फर्स्ट नेम मेरे को चेंज करना है मेरा मोबाइल नंबर चेंज करना है ईमेल आईडी गलती से मैंने एंटर किया है तो आपको कहीं ना कहीं वो डेटा स्टोरेज रहना चाहिए so that you know you can make the necessary corrections. So here if I look at data here any number or character or a decimal you know can be a simple data please. Like they can be thousands and lakhs and millions of such data. So what exactly we can do with this particular data please? So that is finally we have to play with this data. So what exactly we mean by that? So before that any questions please? Yep. Okay, let me share the screen here. Yep. Okay. Okay. So here so I'm sorry didn't share the screen here. So this is what I was talking about. So what is data is all about? So the point is that you know like see I'm talking about a student application बैंक application anything. अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी डेटा आप एंटर करते हैं जैसे कि आपका नाम मिडिल नेम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा.
तो इसको ही हम डेटा बोलते हैं। उस तरह दे कैन बी मिलियंस ऑफ सच डेटा। तो अगर जब आप ये देख रहे हैं तो ये काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड है और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, मोबाइल नंबर है क्या, या फिर और कुछ है क्या, ये 71.5 क्या है, आई डू नॉट नो, बिकॉज दिस इज सिंपल डेटा हियर। ओके, सो दिस वन, इस डेटा को हमें प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करना है और कहीं ना कहीं स्टोर करना है इसको, ताकि हम appropriately we can make use of it in a meaningful manner, please. So this is where a database comes across. So a database, like you have lots of vendors here. It may be MySQL, it may be Oracle, it may be SQL Server, lot of things here. But when you look at a database, the data what we had seen just now, the unstructured one, now here it is more structured, exactly like an Excel sheet. Okay, तो जैसे एक्सेल शीट में होता है, कॉलम नेम होती है, कॉलम डेटा होती है, बहुत सारे रोज होते हैं, उसी तरह हमारा डेटाबेस में भी वी हैव समथिंग कॉल्ड आईडी, नेम, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, प्लीज। ओके, एंड अंडर दैट वी हैव लॉट ऑफ डेटा, प्लीज। सो हियर इसको ही हम कॉलम नेम्स को जो है वी कॉल इट एज फील्ड्स, और जो भी डेटा हम फिल करते हैं यहाँ पे उसको हम बोलते हैं डेटा। और ये सिंगल लाइन जो रो आपको दिख रहा है, ओके, दिस रो we call it as a record. Like that, they can be thousands and millions of records in any database. I'm just coming to take some questions from your side here. Yep. Yes. Certificate, I think already it's very clear, like, they'll be sharing the link here. Okay. Yeah. So a very good question here. Okay, so what are the benefits of seamless database integration and how can it impact business operations? That question is something, I really love to take it. Okay, seamless database integration means, for example, let me talk about icicibank.com. Okay, so icicibank.com, like, it's a very massive application which is spread across almost the entire India, please. Okay, so we have even operations across the world also for ICICI Bank. So here, when I talk about seamless integration, what exactly I mean that is, I'll just come up with a simple diagram here. You already have a diagram here. Let me just show you that here, please. Assume that this is my application, some application, maybe ICICI or HDFC or Amazon, and this guy is having this technology is having a number of databases, one located, in Hyderabad, one located in Pune, another one located in Bangalore, like that, a number of different databases, please. Okay, and ICICIbank.com being a very massive application, okay, so they have literally split lots of databases. So tomorrow, in my application, if there is some change, some modification in my program, okay, maybe my Java technology में version जो है, I mean standard version तो 8 है, मगर बात यह है कि 8 वर्जन के बाद जो है 17 वर्जन काफ़ी स्टेबल हो चुका है। तो 8 वर्जन्स में हमें समझ लो कि आपने एप्लीकेशन डेवलप कर दिया है और सारी चीज़ परफेक्टली चल रहा है, और हमारे क्लाइंट बोल रहा है यार मेरे को ये चेंज करना है, आई हैव टू मेक दिस चेंज, आई हैव टू मेक द चेंज, दैट मीन्स आई हैव टू ब्रिंग इन सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। ओके, सो समझ लीजिए आई एम गोइंग विद अ फ्रेमवर्क, and that framework is not being supported by Java 8. So that means I've changed the version here. When I change the version, unfortunately, एक गारंटी नहीं करता हमारा डेटाबेस कि उसको सपोर्ट करे या ना करे। ओके, तो इसके लिए जो है हमारे को कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज ये तो रियल टाइम में तो आ ही जाती है। ओके, सो हियर इन ऑर्डर टू रिजॉल्व ऑल दिस थिंग्स, we have something called, your DevOps, Docker, Jenkins, in order to ensure that, the integration is very simple. क्योंकि इससे पहले almost 15 years back it was a very tough job. Whenever a new version changes, like it was not guaranteeing that, it will support the database, but now we have a lot of tools, automation tools, like especially I think you might have heard of Jenkins, okay, and Docker, Kubernetes, lot of things, which will help us, go for seamless integration. And another thing, a very massive topic and very trending topic is microservices. यानी कि इससे पहले कैसे था बोले तो आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, एक छोटा सा चेंज मैंने कर दिया है, समझ लो ऐसे ऐसे बैंक एप्लीकेशन मैंने डेवलप कर दिया है, और उसमें जो है मुझे साइनअप एप्लीकेशन साइनअप मॉड्यूल में कुछ चेंजेस मैं कर रहा हूँ, और मुझे जो है सारी चीज़ फिर से मुझे रिकम्पाइल रीडिप्लॉय ये सारी चीज़ करना पड़ता था। बट नाउ microservices has come up in a big way. So what it says is, जहाँ पे भी आप चेंज कर रहे हैं, only that part will be affected. So basically,
These technologies help us, seamless integration. So irrespective of the technology, microservices plays a very powerful role for such things, please. So that is their place. Okay. Yeah. Uh, yeah, Bhumbar Lakshman, you have a good question here, sir. How to start coding and what would be the next step? Okay, so the point is like, yeah, the point is कोडिंग जो है आपको स्टार्ट करने के लिए यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, जैसे कि इससे पहले कहा गया कि सी प्रोग्रामिंग जो है काफ़ी फंडामेंटल माना जाता है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस माना जाता है, सो यू शुड स्टार्ट विद सी प्रोग्रामिंग। ओके, और बात यह है कि जो भी आप कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हैं, हमारे रियल टाइम में भी हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ देखते हैं। ओके, उस कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैं कहता हूँ कि सी में जो है आपको bare minimum thing, what you should understand is in C programming, spend time 1 month 2 months, you spend some time प्रोग्राम्स कीजिए। ओके, अक्सर जो है जब हम प्रोग्राम करते हैं बहुत सारी एरर्स आते हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं। ओके, अरे यार इतने सारी एरर्स आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है। ओके, पैनिक नहीं होना चाहिए, जितना ज़्यादा एरर्स आते हैं आपको फिक्स करना है। सो आई वुड से सी इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू स्टार्ट विथ। उसके बाद एक बार आपने सी सीख लिया है, आफ्टर दैट lots of other technologies will become damn easy for you। Okay, so you should start in a very structured way, please। Okay, so there was another thing, uses of SQL in a daily life। Okay, so another good question here, uses of SQL in a daily life। समझ लीजिए कि आप अमेजोन यूज़ कर रहे हैं आप। ओके, हम फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हम रियल टाइम में यूज़ करते हैं ऐसे चीज़। अमेजोन में हम कार्ट में ऐड करते हैं, तो अक्सर जो है ना एज ए कस्टमर यानी कि एज ए यूज़र मैं जो है मैं चेक करना चाहता हूँ, यार मैंने कार्ट में कितने आइटम्स मैंने ऐड किया है। Okay, so that means for me it's very easy। Okay, I can take the help of some buttons and all that। Okay, on the click of a button I'm getting a lot of information, but behind the scene there's a big story, please। Okay, we have a technology, and that technology will connect to database, and database understands only a simple language called SQL language। So any technology you happen to work on, okay, has to basically connect with the database, talk in that language, translate that। So we literally use SQL almost in our daily life, please। You think of any application, yeah, it's there। एंड अनदर गुड क्वेश्चन इज, किसी ने पूछा है कि एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है, कौन सा काफ़ी पॉपुलर है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स आपने एक कहा। तो यहाँ पे पॉइंट क्या बोले तो जब आप एसक्यूएल के बारे में बात कर रहे हैं या फिर नो एसक्यूएल के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों का फंडा जो है काफ़ी अलग है, प्लीज़, ऑब्जेक्टिव अलग है। हम डेफिनेटली ये नहीं बोल सकते कि एसक्यूएल जो है नो एसक्यूएल के साथ सुपीरियर है या फिर नो एसक्यूएल जो है एसक्यूएल के साथ इंफीरियर है, हम नहीं बोल सकते। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। देयर कैन बी एप्लीकेशंस, स्पेशली अगर आप ग्रीन एनर्जी देख रहे हैं, ग्रीन एनर्जी यानी कि सोलर से आप एनर्जी कैप्चर करते हो और उसको जो है एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं सोलर एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी, प्लीज, जिसमें पोल्यूशन नहीं होती है। तो ऐसे एप्लीकेशंस में जो है ना ज़्यादातर डेटाबेस भी होती है और नो एसक्यूएल भी होती है। सो बोथ ऑफ द थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। इट्स नॉट दैट SQL has replaced NoSQL or NoSQL has replaced SQL। It's a complementary thing, please। Yeah. Yeah, the thing is that the point is definitely I'll be going with the practical implementation probably in the next session। Okay, so I'll be definitely going with that, yes, because I'll be showing couple of queries and we'll be trying to play with couple of queries here। Okay, and definitely the point is that थोड़े challenges भी देखते हैं क्या हो रहा है बोल के, then that should be a perfect one, please। Yeah। इज MongoDB a डेटाबेस? जी नहीं, MongoDB हम डेटाबेस नहीं बोल सकते हैं। ओके, नहीं बोल सकते हैं, उसको नो एसक्यूएल बोलते हैं। ओके, आप कॉन्सेप्चुअली देख रहे हैं, हाँ MongoDB में भी मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ, मगर जैसे हम एसक्यूएल में यूज करते हैं, ओके, यूज नहीं कर सकते क्योंकि MongoDB में रोज एंड कॉलम्स का फंडा नहीं होती है। ओके, और डेटा फेच करना काफी फास्ट होती है, प्लीज। Okay, so I would say it's a NoSQL DB, please। So that would be a better one, please।
How is the developer of SQL? Yeah, it's pretty good. It's pretty good, you know, because uh, database is always there. You think of any application, database is always there, and SQL developer, you know, there's always a scope for that. So it's really good, no doubt about it. Yeah, and it's a very old thing. It's nothing new. It's nothing new, please. Yeah. Should I have a complete SQL database for web development? Okay. Yeah, you need to have a complete database, but you don't need to have complete knowledge of SQL, please. If you want to develop a web application, you really don't need to have complete knowledge of database. You need to be fundamental. At least you need to have बेसिक नॉलेज ऑफ क्वेरीज प्लीज ओके क्योंकि अगर हम रियल टाइम की बात कर रहे हैं डेटाबेस में जो है बहुत सारे चीज़ें होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हम बोलते हैं और उनका काम ये होता है कि सिक्योरिटी देना एक्सेस देना टेबल्स की डीबी स्कीमा क्रिएट करना है बहुत सारी चीज़ करते हैं मगर रियल टाइम एक एप्लीकेशन एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे जो है ना डेटाबेस किधर है वो भी हमें ढंग से नहीं मालूम होता है हमें सिर्फ मालूम होता है कि एक्सेस करने के लिए रिपोर्ट नंबर ये सारी चीज़ होती है प्लीज यस या एनीथिंग एल्स Yeah, so please tell what is the difference between SQL and PLSQL. So let me tell you, SQL, you know, it's basically like the thing is like here. I'll just show it here. Suppose I'm having data here. I'm having data here. If I just want to insert, if I just want to insert something, update something, retrieve something, delete something, you know, that is simple SQL stuff here. PLSQL means it is an advanced part of SQL यानी कि मैं फंक्शन लिख सकता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है हमेशा हम देखते हैं कि most of the MNCs on the last working day you know they get their salary credited okay automatically सारी चीज क्रेडिट होती है तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आती है ट्रिगर ट्रिगर यानी कि एक स्क्रिप्ट ट्रिगर होती है तो दैट इज PLSQL प्लीज अब ऑटोमेटिकली आपकी बैंक में जो है क्रेडिट हो जाती है आपकी सैलरी और उस वक्त जो है ना आपको एसएमएस भी आ जाती है योर सैलरी इज क्रेडिटेड दिस सो सो ऑल दिस थिंग्स प्लीज so that is your PLSQL stuff wherein we can think of a function wherein I can think of a procedure lot of advanced things please lot of advanced things yes I'm working on web development, Hitesh Kumar, and what is the role of database in web development? So remember that when you talk of web development, exactly I'm talking about here, please. Okay. So Amazon.com is a web application. And what is the role of a database? Yeah, someone wants to sign up, someone wants to add something to the cart, someone wants to, you know, update your mobile number, someone wants, and even a vendor, I mean, people are selling something on Amazon platform, you know, they want to register, they want to, you know, sell their goods on this Amazon platform. So somewhere, you know, all those data should be available in the database. Okay. So yes, in a web development, you think of any technology, database acts like a very essential thing, okay? Because whatever you do, whatever you see, whatever data you see or update, retrieve, whatever it is, it comes from the database, please. So database is part and parcel, is a very important thing. I mean, in a web application, please. It plays a very important role. Yeah. Because Java doesn't have a built-in database, Python doesn't have a built-in database, हम data Excel sheet में store नहीं करते हैं. So all these technologies, you know, take the help of a database to store data, to process, to perform CRUD operations. So that's always there. Yeah. Yeah, Hitesh Kumar, that's fine. Yes. How much database SQL is required for a data analyst? Okay. Like for a data analyst, for a business analyst, okay, the bare minimum knowledge that is needed as far as SQL is concerned is, you know, the basic queries. यानी कि आपको डेटा कैसे इंसर्ट करना है, कैसे अपडेट करना है, जॉइंट्स क्या होती है, ओके, यानी कि अलग अलग टेबल होती है, वहां से हम कैसे डेटा फेच करते हैं. इट्स ऑल आई मीन टू दैट एक्सटेंट दैट्स इनफ प्लीज. ओके. यप. Is it possible to combine SQL and Oracle? Yeah, definitely. Because, you know, it's like कैसे बोले तो नहीं. देखो, डेटाबेस में काफ़ी सारे वेंडर्स होते हैं जैसे कि एक ऑरेकल हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर हो गया है, आईबीएम का डीबीटी हो गया है. तो बड़े बड़े एप्लीकेशंस में ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल डेटाबेसेस है
और आप जो है ना इंटीग्रेट कर सकते हैं, आसान से कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है प्लीज। ओके, आपकी एप्लीकेशन में yes you can integrate SQL server, you can integrate MongoDB, you can integrate Oracle server, you can integrate DB to any database, absolutely no issues please. Yeah, any other question please? Yes, Atharva. Yeah, Kushal asks which database is suitable with React. Okay, एक याद रख लो, जैसे कि मैंने डायग्राम में मैंने बताया था कि a database को जो है ना, any technology is fine please. It may be React, it may be Java, it may be .NET, you know, so it stands on its own. What it says is I'm independent, anybody can use me please. Okay, so that's the beauty of this database. So you really don't have to, I mean, it is not tightly coupled to any specific technology. So that's the great thing about a database. It is independent, it is independent please. Yep. Okay, I think in one stack we learn only MongoDB. So is that enough for managing data in that stack, or SQL is somehow used there? Is it necessary to learn SQL in order to become a web developer? I would say, I would say the thing is that, you know, when you talk about Mon stack, it's all about MongoDB, Express, React, and Node.js. Okay, but I can also replace that MongoDB with any other database. So it's perfectly fine. And it all depends on the project. It all depends on the project, you know, like what exactly they think of. अगर उन्होंने बोला नहीं आपको MongoDB भी इस्तेमाल करना है, कोई database भी इस्तेमाल करना है, तो absolutely no issues, please. We have full support. We have full support for that. Yes. Yep. Yeah, the thing is that, you know, definitely in my next section, you know, like I'll be getting the practicality of the database. Okay, how to install, because that is a procedure actually which would be taking some time, and we will be trying to play with couple of queries, like how exactly we can insert, perform some CRUD operations, try to get our hands dirty. Okay, and we will see what best we can do there, so that, you know, that knowledge would be sufficient enough for you. If you want to get into development, that's enough. If you want to get into a business analyst, that's also fine. Okay, anything, the knowledge that would be imparted, you know, that would be great enough please. Yes. Yeah, definitely. I mean, there's a thing, you know, can you teach having a group by limit and all that, you know? So the point is that that's what, you know, like I told you, like in my next session, you know, I'll be talking about database. So we will be, you know, we'll be seeing a couple of use cases there. So that will become easier, please. Yep. Yeah. Okay. The point is that this was my slide here, and the next thing. Okay, fine. So remember, like, you know, I was talking about RDBMS engine. Okay, so the point is that, you know, database can understand only one language, nothing but SQL. So if you look at this particular diagram here, okay, here we are having Java. So Java says that I can understand a simple language called class and object it can understand, because that's its format. Okay, if you look at Python, of course it has its own format, nothing but object oriented programming. It has that particular format, and most of the technologies, you know, they have their own languages, own format. And even database, it has its own format, which we normally call it as SQL, please. It has its own language. So that means, you know, like it's just like, you know, English guy speaking to an Hindi guy, and again Hindi guy has to communicate with an English guy. There has to be some translation here. Okay, so those things are taken care by this particular engine, this one. Okay, RDBMS engine is basically something which allows the SQL queries to be converted, validated, and give the user an appropriate output, please. So ये इंजन जो है सेपरेट नहीं रहता है, जब भी आप डेटाबेस डाउनलोड करते हैं, ओके, उस वक्त ही ऑटोमेटिकली उसमें एम्बेडेड होती है, जैसे कि मैंने सी प्रोग्राम लिखा है.
ओके जब सी प्रोग्राम लिखता हूँ, जब कंपाइल करता हूँ, तो मुझे कंपाइलर की ज़रूरत है ताकि जो है ना हमारी जो भी कमांड्स है अप्रोप्रिएटली कन्वर्ट हो जाए, एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाए। उसी तरह हमारा एसक्यूएल भी उसके अंदर ही इंजन होती है, जो भी क्वेरीज हम देते हैं हाई लेवल में, ठीक है, फाइनली जो है हमारे को आउटपुट आती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंजन विच इज़ एम्बेडेड इन एवरी डेटाबेस, प्लीज। So any questions? या आपका सर्टिफिकेट जो है उसके लिए लिंक शेयर करेंगे, ओके, एंड आई थिंक यू हैव टू टेक अ क्विज एंड you'll be getting that, so you don't have to worry about it, please. Yes, okay. Any other questions? Okay, sir, as a student, I asking one question: how to use database on industrial area? सत्येंद्र राय। देखो, अगर आप इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो पॉइंट क्या बोले तो इंडस्ट्री कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकता है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो सकता है, या फिर आईटी इंडस्ट्री हो सकता है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में भी मैं बात करूंगा तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगा, कोई एप्लीकेशन होगा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, और वो एप्लीकेशन में जो है definitely that will be connected to a database. Okay, so you think of any application, database is always there, please. और database कभी local system में होती है या फिर कभी कभी cloud में भी हो सकती है. So database is always there, please. In any industry it's one and the same, please. Yep. Yeah, anyone else? So here, just going here. So when I go with the programs on the implementation stuff, in my next thing, like I'll be talking about something called normalization. Okay. So let me make it very simple, like what exactly I mean by this. Okay. So normally, like assume that I'm going out for shopping. Okay. I want to buy oranges, bananas, lots of fruits, and lot of grocery items. You just imagine that, if I'm carrying only one bag, I'm putting everything, dumping everything in that particular bag, and after coming home, like it becomes very difficult for me to really pick it up. यानी कि हमारी मम्मी पूछती है एप्पल निकाल, या फिर यू एक्सट्रैक्ट सम अदर वेजिटेबल आइटम, तो लिटरली हमारे को बैग में जो भी है डंप करना पड़ता है। बट इंस्टेड अगर हम सारी चीज़ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कि फ्रूट्स एक पर्टिकुलर कैरी बैग, bananas, vegetables another carry bag, at least it is more organized. So this is what we call it as normalization. Normalization is something to do with ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा जो है रिपीट नहीं होना चाहिए, प्लीज। ओके, अक्सर हम इससे पहले आई मीन टेक्नोलॉजी आने से पहले हम देखते थे, बहुत सालों पहले हम देखते थे कॉलेजेस में, जब एक स्टूडेंट जाता है कहीं एडमिशन लेता है तो उसका फॉर्म फिलअप करते हैं। फिर मुझे लाइब्रेरी में समझ लीजिए कि मुझे लाइब्रेरी में फिर से मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे अलग से फॉर्म होती है। सेम रिपीटेड फॉर अदर थिंग्स। और समझ लीजिए कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, अगेन आई हैव टू गो टू द कॉलेज, आई मीन एडमिशन डिपार्टमेंट, मेक द चेंजेस, अगेन आई हैव टू गो टू द लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, आई हैव टू मेक द चेंजेस। देखो डेटा कितनी जगह रिपीट हो रहा है, ओके, एंड इट इज़ इनकंसिस्टेंट। अगर मैंने एडमिशन डिपार्टमेंट में मैंने चेंज किया और लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में मैं चेंज नहीं किया मेरा मोबाइल नंबर, that means data is inconsistent. So in order to address all those things, we have a very good concept called normalization. So normalization is all about how you split tables into multiple tables, please. So it's something like this, please. Okay, so if I talk about a vendor, again, my city and something like, items. So normally a vendor sells some items and all that. So most of the times, a vendor, see, you can see the child tables here. So if we don't put everything in just one table, because it becomes a mess. Okay, so we try to put data in separate tables. This is what we call it as normalization, and there must be some relation here. Okay, कल के दिन समझ लो पुणे का नाम चेंज हो गया है, so I can make the change only in this particular table, and if I make this change in this table, automatically, it will be reflected in my master table as well, please. And tomorrow, assume that, नहीं यार 31 apple है, 32 orange है, and I want to add one more thing, then directly I can add in this particular table itself. So
any change I make in these child tables will be automatically reflected in the master table. यानी कि मुझे एक बार ही मुझे चेंज करना है या फिर ऐड करना है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर टेबल. मुझे यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. So this is what we call it as, consistency of data. That is, one small change you make, it will be correct, accurate across the application. So that's the concept of normalization, please. Yeah. Anything? Yeah. Any questions? BCA student team for internship and job. Okay. So the point is that, like if you're talking about internship and job and all that, let me tell you, like definitely you can start connecting with Skillected. Okay. So we do have a wonderful line of courses, okay, that caters to different educational streams. Okay, so accordingly, like definitely you can, once you're skilled enough, once you equip yourself, once you learn the relevant technologies, I think it won't be a challenge for you to get internship or a job, please. Yes. Yeah. Anything else? सर, प्लेसमेंट के हिसाब से कितना डेटाबेस का कितना नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, मतलब इंटरव्यूअर के एस्पेक्ट से? ओके, गुड क्वेश्चन सत्येंद्र राय. प्लेसमेंट के हिसाब से आपको एसक्यूएल में कितने नॉलेज रहना चाहिए? ओके, प्लेसमेंट के हिसाब से एसक्यूएल की नॉलेज आपको बेर मिनिमम रहना चाहिए. मतलब आपका क्वेरीज आना चाहिए, जॉइंस आना चाहिए. ओके, ये चीज काफी बेर मिनिमम है, प्लीज. तो ए फ्रेशर के लिए भी हो सकता है या फिर एक डेवलपर के लिए भी हो सकता है. क्वेरीज, मेनली क्वेरीज आना चाहिए. दैट इज द बेसिक थिंग्स, प्लीज. या. Sir, what to do after BCS? Get yourself trained on technology. Okay, look out for a job, and of course, we are there to place you, give that assistance. Okay, and once you are into the job, maybe 2 years down the line, 3 years down the line, try to complete your PG online, something like that. So, upskill yourself like that, please. Yeah. Anybody? Yeah. Any other question, please? DSA is must for placement too. Data structures and algorithms, right? Yeah, definitely, please. डेटा स्ट्रक्चर्स जो है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में जो है बहुत ही फंडामेंटल चीज़ होती है. तो इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क होती है फिजिक्स विद ईज. द पॉइंट इज, लाइक जो बंदा डेटा स्ट्रक्चर्स में अच्छा है, ओके, तो मतलब वो बहुत अच्छा डेवलपर है, किसी भी टेक्नोलॉजी में आसान से जा सकता है. इसीलिए हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जो है ना, अक्सर जो है वो फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस बंदे हो, डेटा स्ट्रक्चर्स में काफ़ी सारी क्वेश्चंस पूछी जाती है, प्लीज. ओके, संदीप रोकाला, एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन अगेन, प्लीज. ओके, फाइन. संदीप रोकाला, आई एम गिविंग यू a वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल. ओके, समझ लीजिए कि आपके आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. तो हम क्या करते हैं, जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन फॉर्म देते हैं, संदीप रोका, राइट? तो आपने ये सारी, यू आर फिलिंग इन ऑल द डिटेल्स, नेम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग. तो आपका मोबाइल नंबर समझ लीजिए 12345 आपने फिलअप किया है एडमिशन फॉर्म में. ओके, फाइन. फिर आपने 10 दिन के बाद अपने लाइब्रेरी में एडमिशन लिया है, रजिस्ट्रेशन किया है. वहाँ पे भी वो लोग फॉर्म देते हैं क्योंकि एप्लीकेशन नहीं है. फिर से आप फॉर्म वहाँ पे फिलअप कर दिए और वहाँ पे भी आपने जो है 12345 करके आपने मोबाइल नंबर दिया, सारी डिटेल्स एज इट इज आपने दिया. फिर आपने जो है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में गए और वहाँ पे डेटा फिलअप कर रहे हैं और गलती से जो है वहाँ पे जो है
आपने वन मोबाइल नंबर नहीं दिया है, ओके, या कुछ अलग से नंबर दे दिया आपने, अलग से नंबर गलती से आपने दे दिया है, मतलब मोबाइल नंबर आप एडमिनिस्ट्रेशन टाइम में दे रहे हैं, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, 3 बार आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, डेटा रिपीट हो रहा है, ओके, और एक जगह करेक्ट है, 2 जगह करेक्ट है, एक जगह गलत है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज इनकंसिस्टेंसी. So normalization is all about nahi. You make a small change, you change mobile number, it should be reflected every place. That means we talk of centralized database. Normalization is all about data should not be repeated. Okay, so उसको हम term use करते हैं data redundancy. That is data repeat नहीं होना चाहिए और data consistent रहना चाहिए, मतलब accurate रहना चाहिए please. So that's the whole normalization please here. Okay, yeah. Anybody? Yeah. Okay, Gomtesh Mitari, as a third year BCA student, I'm having full knowledge of full stack now and I want to research about SQL. So, what I should learn? So, you are having full knowledge of full stack now. So, remember, Gomtesh, the thing is, what I really suggest is like the point is since you're done with full stack, okay, so nothing like researching SQL, okay, you are expected to be familiar with the basic commands. That is what is really important here, okay, because if you talk about full stack here, the point is that already several technologies are there. Java is there, Python is there, several things are there, okay, and those technologies itself, they take care of the underlying SQL queries. But as a student, as an employee, the point is that if you start facing interviews, yeah, for sure you're expected to have bare minimum knowledge of SQL, please. Okay, that is queries, joins, that should be more than enough, please. Yes. Any other question? Yeah, certificate link will be shared shortly. Like 1 minute. Just hold. Just hold, please. Yep. Yeah. Any other questions or Whiskey direct link on DJNA? Yeah. Sure. Sure, please. Trending language in market which is working as a database. What is the trending language in market which is working as a database? My dear Ritesh, no, 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 no. See, the point is that, like if you talk about trending language, it's all about, Python, artificial intelligence, things like that. Okay. But database, like it's not a trending thing. It's been there for quite a very long time. Okay. So it has nothing to do with that, please. क्विज लिंक मैं पेस्ट करता हूँ उसमें. अब तुम उनको बता दो कि क्विज लिंक यहाँ पे अभी पेस्ट होगी या फिर वहाँ पे टैग भी कर रखी है मैंने. तो वहाँ से जाके क्विज अटेंड करो फिर सर्टिफिकेट मिल जाए. ऐसे बोल दो बस. Okay. So I'll be pasting the quiz link very shortly. Okay. So the point is that you have to just hit the link, activate the hit the link, and yeah, once you're done with it, complete the process, please. Yes. What should be done for a database developer? Okay, so we specifically call this as SQL developer, and the point is that like this needs advanced PL SQL language, please. And again, certification is also something very important, that is database certification. So those things, if you really want to get into explore database and all that, certification is mandatory. And what kind of career it will give you? You can also become a database administrator. Yep. So you can see attend quiz. So yes, you can go to that link, complete it. गर्ग HMRL यूनिवर्सिटी है. प्रथम वागड़े. What is about product based company? The product based companies, like if you talk of Microsoft, they develop products, Windows operating system, things like that. See, the point is that see here, they have pasted the link here. Okay, you can go with that place. You can complete it. Yep.
Atharva Memane. The point is that, see, you have come up with a good question, but the point is that, like, it will be a bit confusing because some of them are freshers here. Okay. So that's what I told you, like, probably in the next session and all that, we'll be coming up with the practical part place here. Okay. Yes, hello guys. There is a link in your chat box for the quiz link. क्विज ओपन नहीं हो रही है. क्विज तो ओपन हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? जस्ट क्लिक ऑन दैट, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक. ओके, जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक. ओपन हो रही है. KV ड्रॉल, जस्ट क्लिक ऑन. सर आफ्टर क्लिकिंग द लिंक इज चलो मैं बता देता हूँ एक बार आपको, स्टेप भी बता देता हूँ कि कैसे आपको सर्टिफिकेट लेना है. ठीक है, ये देखिए, जैसे लिंक आप क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा. ठीक है, और आपको वो स्टार्ट करना है. जस्ट अगर किसी को मिल भी नहीं रही है, जस्ट गो टू अ कॉलेज जोन. कॉलेज जोन में आप क्विजेस में जाइए. अगर वैसे नहीं मिल रही है तो वेबसाइट पे जाइए. यहाँ पे मल्टीपल आपको दिखेंगे क्या, क्विजेस. इसमें से लास्ट वाली जो है ना, डाटाबेस वाली, यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करिए और यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा. जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, आपका वहां पे सेशन और ये स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चंस उसमें गलत है तो आप रेज कर दीजिए, विल चेंज इट. Hemant, just if quiz is not opening, go to the website. If Hemant, if quiz is not opening, go to the website. Go to the college zone. I am showing it again. जैसे आप वेबसाइट पे चाहते हो, यहाँ पे जस्ट सिलेक्टेड पे चले जाओ. जस्ट टाइप दिस सिलेक्टेड, यू विल गेट दिस सिलेक्टेड हियर. ओके, देन जस्ट गो टू द कॉलेज जोन. यहाँ पे कॉलेज जोन में जाना है आपको. कॉलेज जोन में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए, वेबिनार क्विज, गेट योर फ्री सर्टिफिकेट नाउ. यहाँ पे जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में ये क्विज मिलेगी. ओके, डाटाबेस. ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए. अल्टीमेटली आपका स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से स्टार्ट कर दीजिएगा. यस सिद्धार्थ, विल चेक द क्वेश्चंस 12, 13, 18. पंकज, चेक दैट क्वेश्चंस एंड रिकरेक्ट. Yes, Amruta, we'll explain the sessions, your concepts of the types of join in our next session as well. Okay. रिक्शा, अतुल, द क्विज क्विट हो गया है बट सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है. देर इज अतुल, देर इज वन ऑप्शन. ओके, अगेन गो टू द वेबसाइट, गो टू योर डैशबोर्ड and go to that quiz. You will get the certificate as well. There is one option to download the certificate. वहीं पे ऑप्शन मिलेगा आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का. डोंट बी ए पैनिक, वहीं पे ऑप्शन है, सिंपल ऑप्शन है. आप वेबसाइट पे लॉगिन कर लो. ये देख रहा है यहाँ पे समीक्षा ने साइन अप किया है. ओके, लाइव दिखता है मुझे किसने किसने. क्विज ओपन नहीं हो रही है. ओके, माय थॉट, वन स्टोरी, एवरीथिंग. आपको जस्ट वहां पे क्लिक कीजिए. नहीं हो रही है तो वेबसाइट पे जाइए, www.selected पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगी. सिंपल है. एनीवन, एनी क्वेश्चंस? गाइज हम एंड कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपको तो पोस्ट करिए. एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको नेक्स्ट वेबिनार किस टॉपिक पे चाहिए. एंड सॉरी गाइज, कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, उस वजह से कुछ तकलीफें आपको हुई है. नेक्स्ट सेशन में हम प्रिकॉशन लेंगे इसका, कि ये इश्यूज फिर से ना आए.
विनय कुमार, यू कैन डाउनलोड सर। आयुष्मान, यू गलती से अगर आपका क्विज सबमिट हो गया, लॉग इन विथ अनदर मेल आईडी, यू कैन रीअटेम्प्ट इट। ओके। कड़ी आकाश, आपका ओपन होगा, जस्ट वेबसाइट पे जाइए अगर ओपन नहीं हो रहा है तो। एंड गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि नेक्स्ट वेबिनार आपको किस टॉपिक्स पे चाहिए। यस, ऋषि, दीक्षु, अतुल, आदित्य, हितेश, नेहा, केवी, जस्ट पोस्ट गाइस कि नेक्स्ट टॉपिक आपको, नेक्स्ट वेबिनार का टॉपिक कौन सा एक्सपेक्ट कर रहा है। आपका कुछ रिकमेंडेशन है तो आप डालिए, हम उस पर टॉपिक, वो टॉपिक को लेके आएंगे। Ayushman, there is one option to download the certificate. Okay, go to your प्रोफाइल, वेबसाइट में जाने के बाद प्रोफाइल में जाइए, आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। ओके, स्वप्निल पाटिल सेइंग सेल्स फोर्स। ओके, नो वरीज स्वप्निल, उस पे भी रखेंगे हम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। If you got the certificate, please tag us on LinkedIn, join our community. Mahinur, I am not getting how to throw the link. आपको लिंक थ्रो नहीं जाना है, वेबसाइट पे जाइए महिनूर, आपके मेल आईडी से लॉगिन करिए। ठीक है, और डैशबोर्ड में जाइए। जैसे आप यहाँ पे जाते हो ना, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपके कोर्सेज जो रहेंगे, आपको यहाँ पे कोर्सेज दिख जाएंगे, और वहां से आप कर सकते हो सर्टिफिकेशन आपका डाउनलोड। ठीक है, बाकी तो सब सॉर्टेड है। ठीक है। Cyber security, yeah, we'll keep the next session on cyber security as well. We are launching our next webinar on AWS, Amazon Web Services. Okay, we'll add cyber security in that as well, Atul. How the AWS will help in cyber security. So our next webinar will be on AWS. See you there. Till that, good night. Anyone have issues, please comment. You can post in the our WhatsApp group as well, which is available in our YouTube bio as well. Join that group. Yeah, thank you.